Hello everyone, welcome back to your maths class. I am again here with some new topics from your maths syllabus. Students, in our previous class, we discussed the divisibility rule of numbers 2 to 10. So, in order to proceeding our chapter, today we are going to discuss the divisibility rule of 11 and some other composite numbers. Okay, so let us start our today's topic. So students, we will start our today's class with the divisibility rule of 11. And the divisibility rule of 11 says, a number is divisible by 11 if the difference between the sum of the digits at odd places and the sum of the digits at even places is either 0 or a multiple of 11. So 11 से वही नंबर डिवाइड होंगे जिनकी ऑड प्लेस की डिजिट का सम और इवन प्लेस की डिजिट्स का सम दोनों का डिफरेंस 0 या 11 का कोई मल्टीपल आएगा, then the number is divisible by 11. Okay. So let us take an example to understand the concept more effectively. Here we have an example. Check whether 2838 is divisible by 11 or not. हमने एक नंबर लिया है 2838 और हमें ये चेक करना है is this number is divisible by 11 or not. Okay. So students, in the given number we have 4 places. Okay. First, second, third, and fourth. So the digits on first and third place are odd place digits and the digits on second and fourth place are even place digits. Okay, so हमने first place और third place जो कि odd places है हमारी, हमने उनकी digits 2 और 3 का सम किया तो क्या आया 5 आया, और जो हमारी second और fourth places हैं जो कि even places हैं इनकी digits का हमने सम किया 8 plus 8 तो हमारा क्या आया 16. Now we have to find the difference of these two sums. So 16 में से जब हमने 5 माइनस किया तो क्या है हमारा 11 and 11 is the multiple of 11. Okay, thus 2838 is divisible by 11 because the difference between the sum of the digits at odd places and the sum of the digits at even places is 11, which is the multiple of 11. So हमारा 2838 जो नंबर है वो किससे 11 से डिविजिबल होगा. Okay, students, let us discuss the divisibility rule of other composite numbers. Okay, so the divisibility by 14, and we can write 14 in the form of 2 into 7. हम 14 को 2 into 7 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. So the divisibility rule of 14 is a number is divisible by 14. कोई भी नंबर 14 से तभी divisible होगा if it is divisible by both 2 and 7. अगर वो नंबर 2 और 7 दोनों से divisible होगा तभी वो 14 से भी divisible होगा. ओके, और 2 और 7 का divisibility rule आपने पहले की क्लास में पढ़ा ही है. Now divisibility by 15. So we can write 15 in the form of 3 into 5. हम 15 को 3 into 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं. So the divisibility rule of 15 is a number is divisible by 15. कोई नंबर 15 से तभी divisible होगा if it is divisible by both 3 and 5. अगर वो 3 और 5 दोनों नंबर से divisible है then the number is exactly divisible by 15. तो वो नंबर 15 से भी exactly divisible होगा. Next, divisibility by 18. So we can write 18 in the form of 2 into 9. हम 18 को 2 into 9, 2 9s are 18. So 2 into 9 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. So the divisibility rule of 18 is a number is divisible by 18 if it is divisible by both 2 and. So students, we can also find the divisibility rule of other composite number as similar as these methods. Okay, now let us solve some questions from the exercise to understand the concept more effectively. Okay, so students, here we are going to solve a question from the exercise 6. And the question is, guess the divisibility of the following number by 8. And here we have taken 32,716 and we have to check is this number is divisible by 8 or not. So the divisibility of 8 is a number is divisible by 8 when the number formed by last 3 digits is divisible by 8. कोई नंबर 8 से तभी डिविजिबल होगा जब उसकी लास्ट 3 डिजिट्स 100, 10s और 1s प्लेस की डिजिट्स को मिलाकर जो नंबर फॉर्म होगा अगर वो 8 से डिविजिबल होगा then the whole number is also divisible by 8. So the number is 32,716 and we have taken the digits on 100, 10s and 1s place. So the number formed by
the 100 tens and ones place digit is 716, क्योंकि हमारा नंबर क्या था 32,716 था, और अकॉर्डिंग टू द रूल हमें 100 टेंस और वंस प्लेस वाली डिजिट को मिलाकर एक नंबर फॉर्म करना है, जो कि हमारा 716 है. सो इफ वी डिवाइड 716 बाई 8, सो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो 716 है वो 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 4 आ रहा है. सो if 716 is not divisible by 8, then the whole number is also not divisible by 8. अगर जो लास्ट 3 डिजिट्स से नंबर जो हमारा फॉर्म हो रहा है अगर वो 8 से डिविजिबल नहीं है तो हमारा पूरा नंबर भी डिविजिबल. Here we have another question from the exercise, question number 3. Test the divisibility of the following number by 11. And here we have number 5533, and we have to check is this number is divisible by 11 or not. हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है. सो हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉलो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11. सो a number is divisible by 11 if the difference between the sum of the digits at odd places and sum of the digit at even places is either 0 or multiple of 11. Okay, so firstly we have to find the sum of the digits at odd places and the sum of the digits at even places. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऑड प्लेस की डिजिट्स हैं उनका सम फाइंड करेंगे और जो इवन प्लेस की डिजिट्स हैं उनका सम फाइंड करेंगे. So the sum of the digits at odd place is 5 and 3, and the sum is 8, and the sum of the digit at even places is also 5 and 3, so the sum is also 8. Okay, so दोनों का सम हमें क्या मिला, 8 ही मिला है. And the difference between the sum of even places digit and odd place digit is 0. दोनों का डिफरेंस क्या आया है, 0 आया है. So if the difference is 0 or multiple of 11, then the whole number is divisible by 11. अगर हमारा डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो पूरा नंबर हमारा क्या होगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा. Okay. In the question number 4, we have to check the divisibility of some composite numbers. Okay, so here we have taken 4,62,654 and we have to check the divisibility of this number by 18. Okay. So according to the rule we can write 18 in the form of 2 into 9. हम रूल के अकॉर्डिंग 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 9 के फॉर्म में लिख सकते हैं. So a number is divisible by 18 if it is divisible by both 2 and 9. कोई भी नंबर 18 से तब डिवाइड होगा जब वो 2 और 9 दोनों से डिवाइड होगा. So firstly we have to check the divisibility of 4,62,654 by 2 and 9. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 4,62,654 को 2 और 9 दोनों से डिवाइड करके देखना होगा. अगर वो 2 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा तो वो 18 से भी डिविजिबल होगा. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, a number is divisible by 2 if it has 0, 2, 4, 6, 8 on its ones place. ओके, कोई भी नंबर 2 से तब डिविजिबल होता है जब उसकी वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई नंबर होता है. तो हियर वी हैव 4 ऑन इट्स वंस प्लेस. 4,62,654 की वंस प्लेस पर क्या है, 4 है. सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. सो अकॉर्डिंग टू द रूल ये नंबर ऑलरेडी डिविजिबल होगा 2 से. नाउ वी हैव टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस नंबर बाय 9. हम 9 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. सो 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ दिस नंबर. हमें इस नंबर की सारी डिजिट्स का क्या करना होगा, सम करना होगा. सो द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ दिस नंबर इज 27. जब हमने इसकी सारी डिजिट्स का सम किया इस नंबर की तो हमें क्या मिला, 27. एंड 27 इज डिविजिबल बाई 9 because according to the rule a number is divisible by 9 if sum of all the digits of the number is divisible by 9. कोई नंबर 9 से कब डिवाइड होता है, जब उस नंबर की सारी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होगा. सो 4,62,654 की सारी डिजिट्स का सम 27 आया और 27 9 से डिविजिबल है. 9 3s are 27. सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 9. अब हमें क्या देख सकते हैं, हम
कि 4,62,654 दोनों नंबर से डिविजिबल है, 2 से भी है और 9 से भी है. सो अकॉर्डिंग टू द रूल, if a number is divisible by both 2 and 9, then it is also divisible by 18. So 4,62,654 is divisible by 11 also. Okay. I hope you all understand the divisibility rule of 11 and other composite numbers very well. Students, you all know maths is all about practice. So try to solve some more questions from the exercise of the related topic. And the remaining topics will be discussed by me in your next class. Okay? Thank you.